बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं, which is alternating current. So in this unit we will discuss the characteristics of alternating current and the behavior of alternating current through different components of AC circuits. So before going to start the characteristics of alternating current, we must know that there are two types of electric current, and those types are direct current and alternating current. So direct current is the type of current which does not change its direction with respect to time. This is called direct current. तो ये करंट की वो टाइप है जिसमें ये अपनी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं करता. So this type of current is called direct current, which does not change its direction with respect to time. For example, this is an electric circuit which consists of a cell connected with a lamp with the help of connecting wires. So you can observe the direction of current, which is the conventional current from positive to negative terminal of this battery. ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा और थ्रू आउट द टाइम इस करंट की डायरेक्शन यही रहती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट. The other type of current is called alternating current. The type of current which changes its direction with respect to time, this is called alternating current. कि ये वो करंट है जिसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी, ये डायरेक्शन अपनी चेंज करता रहता है टाइम के साथ, और इस टाइप ऑफ करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट का नाम देंगे. एंड व्हाट इज मेंट बाय AC source? AC source is the type, is a source or a device which keep on reversing its polarity. कि ये एक ऐसा सोर्स है जिसकी पोलैरिटी रिवर्स होती रहती है. दिस इज कॉल्ड एन AC सोर्स. फॉर एग्जांपल, an AC generator. So it is a source of alternating current. For example, there is an electric circuit which consists of a resistance R and there is an AC source. Such a type of source whose direction changes with respect to time, whose polarity reverses, and this is an output of an alternating current in the form of a sinusoidal trace, a sinusoidal wave. This is AC waveform. आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि there are two halves of this cycle, positive half cycle and a negative half cycle. So during positive half cycle, current will flow in one direction, and during negative half cycle, current will flow in other direction. जैसे आप यहाँ इन particles के इन spots की positions को note कर सकते हैं कि during positive half cycle, if they are moving clockwise, then during negative half cycle they move anti-clockwise, so current reverses its direction. So such a type of current is called alternating current, which changes its direction with respect to time. So these are two types of electric current in the form of direct current and alternating current. Now, there are some characteristics of alternating current. First of all, what is meant by the time period? The time required to complete one AC cycle is called time period. So this is an AC cycle. So the time required to complete this AC cycle is called time period. यानी जहां से लेकर इस पॉइंट तक जो कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा, that is called its time period. And what is meant by frequency? The number of AC cycles completed in 1 second is called frequency. कि ऐसे cycles जो complete होंगे in 1 second, उसको हम frequency का नाम देंगे. For example, frequency of AC in Pakistan is 50 hertz. 50 hertz means that 50 cycles are passing in 1 second. So this is the frequency of alternating current. Frequency and time period, they are reciprocal to each other. F is equal to 1 over T. If time period is short, then frequency would be greater.
Unit of frequency is hertz and its symbol is Hz. This is the symbol of frequency. Now, the waveform of an alternating quantity. अब हमें यहाँ पर एक alternating quantity की waveform को discuss करना है. For this purpose, the output voltage of AC generator, which is an AC source, the output voltage of an AC generator at any instant of time is V equal to V naught sine theta, where V is instantaneous value of voltage, V naught is the peak value of voltage, and theta is the phase. This theta can be replaced with omega t. आप यहाँ इस theta को omega t के साथ replace कर सकते हो. And omega can also be replaced with 2 pi over t. यहाँ आप इस omega को 2 pi over t के साथ replace करोगे. So V becomes equal to V naught sine 2 pi over t. Here small t is instantaneous time or any instant, and t is the time period. So for different values of this time, 0, t by 4, t by 2, 3t by 4 and t, इन डिफरेंट इंस्टेंट्स पर आप ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और इसकी हेल्प से आप उस वेव फॉर्म को ट्रेस कर सकते हैं दैट इज meant for the alternating quantity. So let me start at different instants of time. So when t is equal to 0, here V naught is the peak value, positive peak value of the voltage, and minus V naught is the negative peak value of the voltage. So when t is equal to 0, by using the general equation, when we put t is equal to 0, this small t is equal to 0 in this equation, it becomes V naught sine of 2 pi over t into 0. So after multiplying with 0, this whole factor becomes equal to 0. Hence, sine 0 we know that is 0. So V becomes equal to 0 at this instant. So when t is equal to 0, value of alternating voltage is 0. यानी आप इसको इस point से display कर सकते हैं. And when t is equal to t by 4, यानी 1/4 of the time period, then V is equal to V naught sine over 2 pi over t, and now this small t is replaced with capital T by 4 this instant. यहाँ t से t कैंसिल हो सकता है, आप इसको यहाँ कैंसिल कर सकते हैं और फर्दर 2 और 4 ये भी कैंसिल होंगे, तो V naught sine pi by 2, pi by 2 means 90 degree, and sine 90 is equal to 1. So V becomes equal to V naught. So at this instant of time, there is a maximum value of voltage, and this point is represented at the peak value of voltage V naught. Now, when t is equal to t by 2, half time period. So at this instant of time, this t is replaced with t by 2. यहाँ t से t cancel और 2 को आप 2 से यहाँ कैंसिल कर सकते हो. सो जो रिमेनिंग आपके पास है दैट इज V naught sin pi, and pi 180. So sin 180 is 0. So V again becomes equal to 0 at this instant of time, and this point is represented here. This is the third instant when t is equal to t by 2 half time period. Now, at t is equal to 3t by 4, by putting this value, we will obtain 3 pi over 2. After cancellation, 3 pi over 2, which is actually 270. So sine 270 is equal to minus 1. Hence V becomes equal to minus V naught. So negative peak value of voltage. So this is the point, minus V naught. And finally, at t is equal to capital T, this V again becomes equal to 0 because sine 2 pi, which is sine 360, and it is also equal to 0. So these are
different points of alternating values at different instants of time. अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को ट्रेस करते हैं, एक लाइन के साथ मिला देते हैं, तो आप इस किस्म की एक वेव फॉर्म हासिल कर पाएंगे. So this is called the sinusoidal waveform. So sinusoidal waveform of alternating voltage. यानी एक alternating quantity जो है वो sinusoidally vary करेगी with respect to time. Time के साथ साथ कि initially voltage will increase up to maximum value, then it start decreasing, and then it becomes zero, and again it increases to its a negative peak value, yani in reverse direction, and then again becomes to zero. So this is the complete AC cycle of an alternating quantity. The same can be observed for an alternating current by using equation I is equal to I naught sine 2 pi over t into small t. आप करंट के लिए भी सेम ऐसी ही वेव फॉर्म ट्रेस कर सकते हैं. From this waveform, we have different quantities, different terms. Number one, instantaneous value. So the value of alternating quantity at any instant of time is called instantaneous value, whether it is current or voltage. For example, we have two equations, one for alternating current, I is equal to I naught sin omega t. एक equation आपके पास ये है जिसके जरिए आप alternating current को discuss कर सकते हो at any instant of time. And other is for alternating voltage, V is equal to V naught sin omega t. इन दोनों equations में I और V they are instantaneous values. जैसे अभी हमने V के लिए प्रैक्टिस की है, पूरी एक वेव फॉर्म ट्रेस की है फॉर डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम. तो यहाँ आप T की मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए I और V की मुख्तलिफ वैल्यूज हासिल कर सकते हैं. So these are actually the instantaneous values of alternating current and voltage respectively. Now, there is another term, peak value. So peak value can be defined as the maximum value of alternating quantity, whether it is current or voltage, above or below the mean position. This is called peak value. यानी ये मीन पोजीशन से अबव भी हो सकती है, मीन पोजीशन से बिलो भी हो सकती है, but it should be the maximum value. So the maximum value of an alternating quantity is called peak value. So in these examples, I is equal to I naught sine omega t, V is equal to V naught sine omega t. So in both equations, I naught and V naught, they are actually peak values of alternating current and voltage respectively. इन दोनों equations में I naught और V naught ये दोनों ही peak values होंगी alternating current की और alternating voltage के लिए. And third term is peak to peak value. So peak to peak value can be defined as the sum of positive and negative peak values is called peak to peak value. यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पीक वैल्यूज का जो सम होगा उसको आप पीक टू पीक वैल्यू बोलेंगे, एंड इट वुड बी 2V नॉट एंड 2I नॉट. ठीक है, 2I नॉट एंड 2V नॉट. यहाँ याद रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पीक वैल्यूज को आपने कैंसिल नहीं कर देना कि एक पॉजिटिव पीक है V नॉट, दूसरी नेगेटिव पीक है यानी -V नॉट. तो जब आप इनका सम लेंगे तो ये कैंसिल आउट करेंगे और आंसर इसका 0 आ जाएगा. यहाँ आपने पॉजिटिव और नेगेटिव पीक वैल्यूज का डिफरेंस ऑब्जर्व करना है कि टोटल डिफरेंस कितना है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू. सो दिस इज कॉल्ड द पीक टू पीक वैल्यू. इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये एक वेव फॉर्म की हेल्प ले सकते हैं. सो इन दिस वेव फॉर्म, दिस इज द कंप्लीट एसी साइकिल इन इट्स टाइम पीरियड टी, और ये इसके डिफरेंट फेजेस भी हैं. 0, 90 पे वैल्यू मैक्सिमम, 180 पे 0, 270 पे मैक्सिमम तो है बट इन रिवर्स डायरेक्शन, एंड एट 360 अगेन इट बिकम्स 0. अब यहाँ आपको नंबर ऑफ वैल्यूज देखने को मिलेंगी. सो हियर दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट 90 डिग्री as well as at 270 degree. So this is called the peak value. This is called peak value of alternating voltage. And this one from positive peak
to its negative peak. This value is called peak to peak value of alternating voltage, यानी टोटल जो डिफरेंस है बिटवीन पॉजिटिव एंड इट्स नेगेटिव. इसके बाद एक तीसरी जो क्वांटिटी यहां पर है दैट इज एवरेज वोल्टेज. दिस इज एवरेज वोल्टेज जिसको यहाँ ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया. दिस इज द एवरेज वोल्टेज. इसके साथ एक और टर्म भी आपको नजर आएगी दैट इज VRMS. VRMS. सो व्हाट इज VRMS और इसकी हमें क्यों जरूरत पेश आती है जबकि अदर वैल्यूज भी गिवन है आपके पास इंस्टेंटेनियस भी है, एवरेज वैल्यू भी है, पीक वैल्यू भी है, पीक टू पीक वैल्यू भी है, और इसके बावजूद आपको RMS क्यों मेंशन करनी पड़ती है. So what is the reason why we are using VRMS? So next one is RMS value of alternating voltage, root mean square value. तो सबसे पहले तो ये कि हमें इसको यूज क्यों करना पड़ता है. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हमें क्यों एसी सर्किट्स में इस्तेमाल करना पड़ता है जबकि अदर वैल्यूज आपके पास इंस्टेंटेनियस भी है, आप पीक वैल्यू भी यूज कर सकते हो, एवरेज वैल्यू भी यूज की जा सकती है, पीक टू पीक वैल्यू की भी हेल्प ली जा सकती है. इसके बावजूद हम RMS वैल्यू को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं. फॉर दिस पर्पस the average value of alternating current or voltage over a complete cycle is 0. कि जब आप एक DC एमीटर को या DC वोल्ट मीटर को AC सर्किट्स में लगाएंगे तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल आपको जो एवरेज वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी इक्वल टू 0. यानी एवरेज वैल्यू 0 आएगी. पॉजिटिव पीक प्लस नेगेटिव पीक दे कैंसल आउट, सो एवरेज वैल्यू बिकम्स 0. जैसे यहां आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये पॉजिटिव पीक वैल्यू होगी एंड दिस वुड बी द नेगेटिव पीक वैल्यू. और अगर आप इनको ऐड करेंगे जैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय 2, सो अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है दे कैंसल आउट और आपके पास जो एवरेज वैल्यू आएगी चाहे वो करंट की हो या वोल्टेज की हो वो हमेशा 0 होगी. बट इस सारे प्रोसेस के दौरान जो पावर डिलीवर टू द सर्किट होगी बाय द सोर्स दैट इज नॉट 0. कि करंट या वोल्टेज के 0 अपीयर होने के बावजूद यहां पावर डिलीवर 0 नहीं होगी. और उसकी रीजन क्या है. बिकॉज P इज इक्वल टू I स्क्वायर R एंड देयर इज a square of this alternating quantity. And we know that square of a negative value cannot be 0. एक नेगेटिव वैल्यू का जो स्क्वायर होगा वो 0 नहीं हो सकता. सो दैट्स व्हाई पावर dissipation is not equal to 0 or power delivered by the circuit is not equal to 0. In spite of this, the value of average value of current is 0. So P is equal to I square R. So square of negative value is not 0. इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सिंपल एवरेज यूज करने की बजाय रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यूज करेंगे. सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को यूज कैसे करेंगे. The square root of the mean square value of voltage or current is called the root mean square value. यानी हमें पहले क्या करना है कि वोल्टेज या करंट की जो वैल्यू है उस पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे और स्क्वायर अप्लाई करने के बाद आप उसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर स्क्वायर रूट अप्लाई किया जाएगा. यानी पहले स्क्वायर देन इट्स मीन एंड देन देयर इज स्क्वायर रूट. फॉर एग्जांपल, if alternating voltage varies between 0 and V naught, minimum value is 0 and the maximum value is V naught. तो सबसे पहले तो आप इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे, 0 स्क्वायर V naught square, and then their mean value, their average value. This symbol is for the mean or average value. So mean square value becomes 0 square plus V naught square over 2. And V naught square over 2 is the mean value, mean square value. Now the root mean square value. अब यहां पहले आप देखें कि जो आप यहां स्क्वायर ले रहे हैं स्क्वायर का एडवांटेज क्या है. यहां ये है आपके पास एक्चुअल वेव फॉर्म जो कि यहाँ ग्रीन कलर में आपको रिप्रेजेंट की गई. दिस इज द एक्चुअल वेव फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आप नोट करते हो कि दिस नेगेटिव हाफ साइकिल also becomes positive. ये भी पॉजिटिव हो जाएगा.
अब कोई भी वैल्यू इस मीन पोजीशन से बिलो लाइन नहीं करेगी, because the square of negative value also becomes positive. तो आप यहाँ देखें कि सारे की सारी वैल्यू जो है वो आप पॉजिटिव वेरी कर रही है. there is no negative value, there is nothing below the mean position. यहाँ मीन पोजीशन से नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी. सो इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बिकम्स, यानी दोनों साइड्स पर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे. इट इज कॉल्ड RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड बिकम्स इक्वल टू V नॉट ओवर 2 स्क्वायर रूट, एंड 1/2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0.707 ऑफ V नॉट. तो आपने यहाँ याद रखना है कि जो RMS वैल्यू होगी ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज का 0.707 होगी, यानी आप यूं कह सकते हैं कि almost 70%. So almost 70% of the peak value of voltage would be the RMS value. यानी अगर peak value 10 volts है तो उसका 70% 7 volt होगा. Hence RMS value of 10 volt would be 7 volt. Similarly, यहां जैसे आप इस डायग्राम में देखें कि दिस इज एन output waveform of an alternating quantity, and in this green line this is the peak value of voltage, but this red line is representing the RMS value. So this is the RMS value, and this RMS value is the 70% of the peak value of alternating quantity. Similarly, the same effect can also be observed for the alternating current. So IRMS is equal to I naught over 2 square root, and it is also the 70% of the peak value of voltage, yani 0.707 of I naught. So with the help of these values, we can describe the characteristics of alternating quantities. Thank you.